Hi everyone. So now we are continuing our discussion with this lecture which is on the topic of salient features of the Constitution of India. So we have already discussed couple of things about the Constitution of India, like starting with what is the Constitution, what are the features, and then regarding the Indian Constitution specifically, what was the making, etc. Now we have discussed the general features of a constitution, or let's say the what functions a constitution performs. But here we are going to do those salient features which are related to the Constitution of India. Now the terms that you will be introduced here are going to be very very handy for you, because there are many terms which are going to be detailed. Detailed discussion is going to happen on those topics in the further classes. So please be very careful with the terms that we are using, and please kindly check the other videos also which have been available on the platform. Please do like, comment, share, and subscribe if you feel the contents are helpful to you. So the first is lengthiest written constitution, and we have seen just a question also on this topic. When we were doing the question and answer format of the making of the Constitution of India, so we have seen that जहाँ पर हमने बात की थी कि shortest written constitution, there was one option. So you could have easily made that wrong, that no, we have the lengthiest written constitution in the world. So originally in 1949 हमारे पास क्या क्या था? Preamble, 395 articles, 22 parts में divided. Now what are these all things? 22 parts and then schedules of the constitution. तो ये सब हम अगले lecture में करेंगे. This is what I have dedicated for the next lecture. So preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules was there. But ये original constitution में था. Presently अगर हम बात करते हैं, so of course we have the preamble in the constitution, 470 plus articles divided into 25 parts. ठीक है, कुछ changes हुए हैं and 12 schedules. तो presently आपको ये याद रखना है and originally आपको ये याद रखना है. Of course there have been addition of articles, deletion of articles, deletion and addition of parts also, and that has happened via different amendments. ठीक है, and 4 schedule जो हैं वो बाद में add भी हुए हैं, तभी हमारे 8 से 12 schedule हुआ है. तो वो what are all these schedules of the constitution हम आराम से next lecture में बात करेंगे. So 8 schedules originally, and then 9, 10, 11, 12 got added. Also, what are the reasons that we have this elephantine size of the constitution, which means like very huge or lengthiest constitution? Firstly, the geographical features, because geographically हम बहुत diverse nature हैं के country हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे there are provisions they have given for many of the states and then related to the states and UTs. So that is one reason. Then of course historical factors, because we have borrowed a major set of provisions from the Government of India Act 1935, which itself was a very very bulky document. Then single constitution is what we have in the country. We do not have multiple constitutions or a series of constitution. We have single constitution for both the center and the state. तो provisions जो हैं center के भी state के भी सब इसी में लिखे हुए हैं. That is why it is lengthy. And also dominance of the legal luminaries in the Constituent Assembly. This also we have seen that the people who were indulging in the making of the constitution in the Constituent Assembly, they were belonging to the legal fraternity, legal luminaries. तो उनका dominance होने से क्या हो जाता था कि they were using that legal terminology, legal understanding थी उनके पास ज़्यादा, तो इस वजह से constitution जो है वो थोड़ा सा लंबा होता चला गया. Next is that it has been drawn from various other sources. I will dedicate a lecture on this also. Now इसमें क्या है कि अलग अलग sources से, एक तो आपका historical है ही जो Government of India Act 1935 है, but उसके अलावा भी अलग अलग sources से, यानी different countries से they have borrowed different provisions of the constitution. What they have ensured is that they would not directly copy paste. What they would do, they would take the provision, they would see how much of it is fitting in the case of India based on the situations in India, and accordingly they will modify it. Structural part has been taken from GOI Act 1935. Philosophical part like fundamental rights, DPSPs, has been taken from US and Ireland respectively. Political part like cabinet government has been taken from Britain, executive legislature relation. So there are many of course details, we will do that list later, जहाँ पे हम individual country के साथ में आपका individual section जो है वो देखेंगे, या फिर individual आप बोलो provision जो है वो देखेंगे. Next important feature is that it is a blend of rigidity and flexibility. I have already talked about it in the initial introductory videos also,
that the Constitution of India is neither rigid nor flexible, it is a blend of both. यानी दोनों का features इसमें included है. Rigid constitution में क्या हो जाएगा? There will be the need for the special procedure for the amendment. कि बहुत rigid है अगर कोई constitution तो उसको amend करने के लिए आसानी से नहीं हो सकता है, एक special procedure की ज़रूरत है, like in the case of US. Flexible constitution की बात करेंगे, so amendment will be possible just like any other ordinary law. ठीक है? Example, Britain. India, Article 368, मतलब Indian Constitution, Article 368 talks about two types of amendments. Special majority of Parliament यहाँ पर लगता है और आपका एक special majority and ratification of half of the states लगता है in this kind of special majority जो Article 368 से मिलती है. Now you might get confused, Rabi, that what is it? So you don't need to be confused because basically this whole topic of rigidity and flexibility is related to the amendment of the Constitution, that how easily amendment can be done or how difficult the amendment process is. So when we will do the topic of the constitutional amendment in the case of India, like how amendment happens in our constitution, then we will have the discussion on Article 368 and we will talk about these majority and all of that also. ठीक है, मैं बीच में आपको एक और section दूंगी when I will talk about different kinds of majority. तो वहीं पर ये feature लगता है, इसलिए उसकी detail हम तब देख लेंगे, अभी आपको परेशान नहीं होना है. And then we also have certain provisions in the constitution wherein we do not use Article 368 for the amendment, and then it just happens by simple majority. ठीक है, like ordinary legislative process. So we have different kinds of special majority, we have simple majority, we have some other kinds of majorities also. All of that we will see in the further classes. Next is that we have a federal system with unitary bias. Now again इस पे तो पूरा separate chapter है आपका federal system, unitary system पे, but introductory आप यहाँ से लोगे. So what is this federal system? First of all, that the government is existing at both center and the state level. ठीक है. However, we are telling that yes, we do have this system, but we have a unitary bias. Unitary bias मतलब थोड़ा सा inclination more towards the center. So we have both federal and non-federal features in the constitution, but the term federation has nowhere been used in the constitution. तो क्या term use होता है? Although we have the features, but the term is not used. So what is the term that is used? Article 1 of the Constitution says that we are not a federation, but we are a union of states. Now, when we say union of states, it basically means, and when we do not say the term federation, it basically means that firstly, there is no agreement by the states. ठीक है, कि जैसे US में क्या हुआ था, the states they agreed with each other and they came 13 states starting में, अगर आपने US की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो states came together with the help of agreement. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था. और दूसरी चीज़, the states in India are not allowed to secede. Secede मतलब they cannot tell कि now we don't want to be a part of the country and we want to move away. No. Because of these two major reasons, we do not call ourselves a federation despite of having the federal features कि center और state पे हमारी सरकार exist कर रही है. Therefore, we have the federal system in the form, like जो format है हमारा center state का वो है, but हम unitary in spirit है, यानी unitary biases हैं हमारे. अच्छा, basically इसका क्या मतलब है? That there are many provisions in the constitution which directly shows that inclination that we have towards the center, more inclination towards the center. And what are those features? We will do in detail in the further classes. So because of this nature of our constitution, there are several names given to it. For example, it is quasi-federal. Quasi-federal matlab semi-federal, because we do not have fully federal constitution. Then bargaining federalism, then cooperative federalism, because we have relation between center and state and state and state. Federalism with centralizing tendency, federation with centralizing tendency, etc. इसको आप किसी भी तरीके से बुला सकते हो, but the core idea remains this. Next feature is your parliamentary form of government. Again, we will have a separate lecture on the parliamentary and the presidential form of government. All of these are given in Lakshmikant also, so we have to discuss them in detail. And there are many prelims questions coming from all of these sections: federal system, parliamentary system, etc. So we have a parliamentary form of government, and the core idea of parliamentary form of government we have borrowed from Britain, because US में there is presidential form of government. तो हमने वो नहीं borrow करा है, हमने parliamentary borrow करा है.
बट वी हैव मेनी डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश सिस्टम. तो हमने कोर आइडिया को बोरो करा है लेकिन अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा है. ठीक है, क्या क्या है उसको समझेंगे. सो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, देयर एग्जिस्ट्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. देन इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस. रिस्पॉन्सिबल तो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज हियर इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. नो व्हाट आर ऑल दीज मीनिंग्स. ठीक है, आपको थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, बट आपको घबराना नहीं है. When I will explain you in the further classes about the types of government, before going to talk about parliamentary, federal, etc., I will introduce you to these organs of the government: legislature, executive, and judiciary. We will discuss in brief about the working and the functions of these government. इनका क्या काम होता है, क्या कर रहे होते हैं, and a rough idea once you will get, you will understand how each of them is related to each other also. Because of that, आपके लिए बाद में ये टर्म्स जब हम इसको डिटेल में करेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट नाउ इंट्रोड्यूसिंग यू द फीचर्स. when we'll do that in detail, you will understand that executive is, you can say, just a sub part of the legislature. Legislature is the broader aspect, if you say so, and they are responsible to it, and collectively also, individually also, and there are many things जो कि आप इसमें डिटेल में पढ़ोगे. ऑल्सो अच्छा, वेस्टमिंस्टर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये लंडन में एक प्लेस है जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है, एंड बिकॉज वी हैव बोरोड द फीचर, तो वी जस्ट कीप दैट नेम. We have this parliamentary form of government not only at the center but also in the states in India, which means the executive will be responsible to the legislature even in the center. Now quickly just see some of the features of the parliamentary system. Firstly, we have both kind of executive, nominal and real. नॉमिनल मतलब जिसके पास सिर्फ नेम सेक के लिए पावर है, बट रियल जिसके हाथ में रियल पावर है. सो अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द रियल एग्जीक्यूटिव इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, ये चीज़ आपको भी याद रखनी है. देन वी हैव अ मेजॉरिटी पार्टी रूल, दैट जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसका रूल होता है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, अभी बताया था. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, तो वही चीज़ होती है कि जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट अभी फॉर्म कर रही है, जो पार्टी, विच मीन्स जो लोग सरकार में हैं. ठीक है, तो यहाँ के ही लोग क्या होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं. एंड देन यू हैव द ऑपोजिशन एंड अदर पीपल इन द लेजिस्लेचर, ब्रॉडर एस्पेक्ट. सो मिनिस्टर जो होते हैं वो बिल्कुल मेंबर्स तो होते ही हैं लेजिस्लेचर के. ये पॉइंट आपको तब और ज़्यादा क्लियर होगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन दैट. सो देयरफॉर दे से दैट मिनिस्टर्स आर ऑल्सो द मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर. देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, डिपेंडिंग ऑन हम सेंटर या स्टेट की बात कर रहे हैं. एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली. लोअर हाउस या आप दोनों सेंटर के लिए आपका लोकसभा हो गया और स्टेट के लिए आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया. डिसोल्यूशन मतलब वो ख़त्म हो सकता है, जैसे अपर हाउस जो है आपका वो ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, दैट इज़ अ नेवर डिसॉल्विंग हाउस, दैट इज़ एवर गोइंग हाउस. So how does all of these happen? You will understand when you study the functioning of legislature and executive. And then quickly seeing some of the differences between the Indian and the British Parliament. Firstly, Indian Parliament is not a sovereign body because हम constitutional supremacy देखते हैं, but British में the Parliament is the sovereign body. Then India में the head is because we have the republic form of government, so we have the head of the state elected. अच्छा, two major things you should know right now. Head of the state in the case of India हम जो बोलते हैं that's president of India, and just nominal executive नाम के लिए. ठीक है, and head of government, you should not confuse between all of these, is your prime minister, real executive. The same will go in the case of state. So the head of the state will become your governor and head of the government will become your chief minister. ठीक है, इतना अभी आप याद रख लो just for this one, and then in the continuing classes ये सब और clear हो जाएगा. Therefore they say that head of the state, which means president, we have election for the post of president. So we are republic. ब्रिटेन में क्या होता है, दे हैव हेरिडेटरी हेड, मतलब एक फैमिली के ही लोग वन आफ्टर द अदर हेड बनते हैं. सो दैट इज़ अ मोनार्किकल काइंड ऑफ सिस्टम. अच्छा, बिकॉज in both the kind of parliamentary form, there is one common thing that we see, that the role of prime minister is huge, the real executive.
and therefore this system is alternatively also called as prime ministerial form of government because of the supreme role of the prime minister being played in the different countries. And US में जैसा हमने देखा presidential form of government है which we have not adopted because they have very strict separation of power between legislature and executive. हमने क्या देखा, they are related to each other. There is cooperation and coordination in the case of parliamentary system, but in the case of presidential system there is strict separation of power. And as I said, the detailed features आगे करेंगे. Next feature is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Now this is very important. Understand this very, very clearly. So what is given here? Firstly, parliamentary sovereignty, which means there is supremacy of the parliament, जो कि ब्रिटेन में होता है, and judicial supremacy, जो कि US में होता है, US Supreme Court. So in the case of India, what we do is we focus on the supremacy of both. ठीक है, पार्लियामेंट की भी और जुडिशली की भी. ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट सुप्रीम, वो एक अलग चीज़ है, बट हम दोनों पे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देते हैं. हम यूएस से जुडिशरी की और ब्रिटेन से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बोरो करके एक सिंथेसाइज फॉर्म में इंडिया में हमने यूज़ किया हुआ है. So in this, firstly we will have to understand what are the differences between the parliamentary system of India and Britain, जो मैंने आपको भी कुछ फीचर्स बताए हैं, but there is a whole list of this to be done जो हम अगले आपके उस डिटेल टॉपिक में करेंगे. Then we also need to understand about the judicial supremacy में differences between India and US. US में जो फॉलो होता है वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इंडिया में जो होता है वो होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. There is no point discussing this right now, the details of which, because it is very lengthy discussion, and as and when we come to the topic of fundamental rights we will have a greater discussion on these two topics. ठीक है, so for the time being आप बस इसको अभी ये याद रख लोगे, that will be okay because you don't have to worry. इसको जहाँ पर जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वहीं पर किया जाएगा. अच्छा, because of this happening here, and this is explicitly mentioned in Article 21 of the Constitution also, and therefore we say that in the case of India we have slight narrow scope of the judicial review power of the Supreme Court. What is judicial review power? Again the details are to be done in judiciary topic, but a quick discussion on that will tell you that judiciary is reviewing, ठीक है, दोबारा उसको व्यू कर रही है, which means if there is any law made by the legislature or if there is any action taken by the executive, the judiciary has the power to check that, to review that, and if they feel that they are going against the constitution they can declare them as unconstitutional, null and void. That is the key idea of the judicial review. And therefore in India we say that we have a synthesis of the parliamentary system and judicial supremacy. और यहाँ पर एक और चीज़ क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वाया द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू डिक्लेयर करती है किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ऑल्सो पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. तो हमने क्या देखा कि दोनों का इम्पॉर्टेंस कैसे है, जुडिशरी का इम्पॉर्टेंस कैसे है, बिकॉज जुडिशरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल if after reviewing they find that okay they have gone beyond the provisions of the constitution. But we have given power to the parliament also, parliamentary sovereignty भी है, because even parliament can make certain changes and amend a major portion of the constitution through the constituent power. तो हमने दोनों को जो है वो places दिए हुए हैं. Next feature is your integrated and independent judiciary. Now we have talked enough on the legislature and executive, so what about the judiciary? So the kind of system that we have judiciary related in India is integrated and independent. Now see, in the case of legislature and executive you have the government and let's say the legislative organ existing at the center also and at the state also. But judiciary के केस में क्या है, it is not at the center and the state. See the location you will find that okay you have high courts, that is a different thing, but ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ सेंटर लेवल के इश्यूज़ को देखती है सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट लेवल के कोई इश्यूज़ नहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना. सो वी हैव इंटीग्रेटेड विच मीन्स दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, एज अ चेन है, सेपरेट नहीं है कि ये अपना है और ये अपना है, नो. सो सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, then high courts at the state level, then subordinate courts में और नीचे के courts आते हैं district court and other lower courts. All of that we will do detail में judiciary में. Also because of this integrated system we understand that there will be enforcement of both the central and the state laws. However US से different है हमारा. US में क्या होता है, फेडरल जुडिशरी होती है सेंटर इशूज़ के लिए और स्टेट जुडिशरी होती है उनके स्टेट इशूज़ के लिए.
देन वी ऑल्सो हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकॉज इंडिपेंडेंट है तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो इंश्योर करते हैं कि जुडिशरी किसी से भी इम्पैक्ट ना हो, नहीं तो जुडिशरी विल नॉट बी एबल टू गिव जस्टिस, जो कि उनका मेन काम है. So for example, what are some ways in which we ensure the independence of judiciary? Like we give security of tenure to judges, कि ये नहीं उनको जब भी हटा दिया, ठीक है, हम एक फिक्स टेन्योर देते हैं, एक फिक्स सर्विस कंडीशन देते हैं सारे जजेस को. जो भी सुप्रीम कोर्ट की एक्सपेंसेस होती है, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर टू बी डन इन डिटेल इन द टॉपिक ऑन पार्लियामेंट. Then also we have the separation of judiciary from executive. नहीं तो if they would have been like influenced by each other, judiciary would not. जो सरकार में है, अगर वो judiciary judges को influence करने लग जाएं तो judiciary कभी भी independent justice तो दे ही नहीं सकती. Therefore we need to have independent judiciary. And सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें से 2 पे तो क्वेश्चंस आपके आए भी हुए हैं इन द प्रीलिम्स. नेक्स्ट फीचर इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. ऑफकोर्स डिटेल हम आराम से देखेंगे, बट ब्रीफली दिस इज गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. We have 6 fundamental rights: right to equality, Article 14 to 18, right to freedom, Article 19 to 22, right against exploitation, Article 23-24, right to freedom of religion, 25 to 28, cultural and educational rights, 29 to 30. This is 29. Don't get confused कि this is not 21, this is 29. ठीक है. And then what is the last one? We have the constitutional remedies, Article number 32. सो फंडामेंटल राइट्स का कोर आइडिया क्या है? दैट इट गिव्स द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एंड इट ऑल्सो पुट्स लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब लिमिटेशन, द होल आइडिया ऑफ गिविंग राइट्स टू द सिटीजन्स और लेट्स से एट प्लेसेस नॉन सिटीजन्स ऑल्सो इज टू लिमिट कि जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है वो अपने मर्जी से कुछ भी ना कर लें, अपनी टिरेनी ना चला लें और कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी लॉ ना बना लें. ऑल्सो it is justiciable in nature, which means if your fundamental right is violated, you can move the court, you can go to the court and ask for justice. And then वहाँ से क्या होता है, जो कोर्ट है वो कुछ रिट्स मतलब कुछ ऑर्डर्स इशू करते हैं टू प्रोवाइड यू योर फंडामेंटल राइट, एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट. मतलब ऐसा नहीं है कि बस इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रिटन मैनर एंड इट विल जस्ट बी ब्लाइंडली फॉलोड. नो, it is restricted at times so that if there is any situation जहाँ पर your fundamental right starts to get hamper the other person's fundamental right, in that case we will have certain restrictions also. It is not sacrosanct. ये नहीं है कि इसको हम बिल्कुल कोई something like you would have the core belief that it is बस supreme है, सारा power इसी में है, this is so pure. It is not of that nature. There are restrictions imposed on that जब भी हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगी, and also they are curtailed and repealed by the parliament through constituent amendment act whenever it is needed. Also अगर national emergency की बात करें तो उस टाइम पर सस्पेंड भी किया जा सकता है except the rights guaranteed by 20 and 21 article. So what exactly happens during emergency, वो तो हम emergency के topic में देखेंगे. Next is about the DPSP, Directive Principles of State Policy. It is given in part 4 of the Constitution. It is called, further subdivided into, and this is not divided into constitution, this is just divided for the sake of understanding, into socialistic principles, Gandhian principles and liberal intellectual principles. जैसे फंडामेंटल राइट्स वर गिविंग यू द आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिकॉज हम बराबरी की बात करते हैं, लेट्स से या फ्रीडम की बात करते हैं, तो DPSPs आर टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि समाज में, सोसाइटी में भी लोगों की जो है बराबर स्टेटस होनी चाहिए, इकोनॉमिकली लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए. ऑल ऑफ दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर. एंड इट गिव्स द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, एक स्टेट जहाँ हम वेलफेयर मेजर्स पे बात करते हैं, लोगों के भलाई के लिए बात करते हैं. बट द मेन की फीचर हियर इज़ दैट unlike fundamental rights which was justiciable, that you could have gone to the court to ask that my fundamental right is violated, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है. सो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल. यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट इफ़ योर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड. यू कैन नॉट, सॉरी, इफ़ योर DPSP इज़ वायलेटेड, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड आस्क कि ऐसा कुछ वायलेशन का है. नो, इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये आप कोर्ट में जाके मांग नहीं सकते. हाउएवर, this does not mean that it has less significance. No, it is very important because they impose a moral obligation on the state authorities.
ठीक है, कि इनके एप्लीकेशन के लिए आपको मोरली क्या क्या चीज़ें काम लेके करनी है वो स्टेट्स को पता लगता है DPSP से. Also, because according to the constitution, these principles are very much fundamental in governance. आपको ये सब ज़्यादा क्लियर होगा when we will have, see, these topics are very very lengthy. There is one thing that you need to understand. जो भी अभी हम कर रहे हैं, initially also I told you, every single feature that I'm doing right now with you in this topic has a separate chapter dedicated. Every single thing, right, starting from जो parts of the constitution, schedules of the constitution, sources of the constitution, and then types of government and judiciary and legislature, executive, rights, DPSP, all of that. तो ये सब हम करेंगे अभी. तो इसीलिए तो इसको एक फीचर का नाम देंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस टू यू एज अ salient feature, so that you understand the constitution of India's important aspects briefly at once, and then in the individual lectures you see it in the detail. I hope you are getting that idea. So according to the constitution, these directive principles are very important, very fundamental in the governance of the country, and it should be the duty of the state that they apply these principles in lawmaking. Then we have the fundamental duties. They were not provided in the original constitution, and 42nd Amendment Act 1976 जो इमरजेंसी के टाइम पर जो एक्ट आया था उसके थ्रू इसको इंक्लूड किया गया in the original constitution. This was included by the recommendation of a committee. The name you should remember, Swarn Singh Committee. There were 10 fundamental rights that got initially added by 42nd Amendment Act, and then one fundamental right was, fundamental duty. I'm very, very sorry. So 10 fundamental duties originally got added by 42nd Amendment Act, and one fundamental duty got added by 86th Amendment Act 2002. This is given in Part 4A of the Constitution, and there is just one article which deals with these 11 fundamental duties, which is Article 51A. So 11 duties, and they are also non-justiciable in nature. Next is a secular state. Now again I'll have a very very detailed discussion on secularism because the chapter is given in your NCERT. But quickly, अगर हम roughly understand करें in the political context what is this secularism. So the Indian state will not have any official religion as a particular religion. ठीक है, जैसे there are countries जो कि एक particular religion को अपना official religion भी मानते हैं, but India में we call ourselves a secular state because we do not have an official religion. And there are certain provisions of the constitution which gives this idea or which reveals the secular character of the constitution. For example, 42nd Constitutional Amendment Act say there is a term secularism which got added in the preamble. Preamble also talks about liberty of belief, faith and worship, which means everybody is having their own sets of freedom. आपको जैसे अपना वर्शिप करना है, जो रिलीजन मानना आप मानो, कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं देश का. And then there are certain other articles also. ये सब क्या क्या हैं हम उस पर आराम से बात करेंगे. See, all of these are fundamental right. और Article 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा. So we will talk on that. Then Indian concept of secularism is actually considered as a positive concept. Positive in the sense that we give equal respect to all the religions. हम ऐसा नहीं करते हैं कि discriminate करते हैं. We give equal respect to all the religions, and therefore we try to protect all the religions equally. So that is in a positive manner. Western concept of secularism को negative देखते हैं. Negative यहाँ पे it's not about wrong. Don't consider this positive negative to be wrong. It is just about positive is like positive enforcement, negative is like something which is having any kind of limitation or restriction. So here what happens, there is complete separation between the religion and the state. The religion or the church does its own work, the state or the politics does its own work. But यहाँ पर हमारा थोड़ा सा involvement होता है because of the nature of the country that we are in. So anyways, we will have a separate discussion on the distinction between them. The reason being because there has been even a question asked in your mains that you have to distinguish between the Western and the Indian notion of secularism. Also, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड वी हैड द कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम. वो लोग कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंट करवाते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अबॉलिश कर दिया और अब हमारा एक जनरल इलेक्शन होता है. कोई कम्युनिटी वाइज नहीं होता है, अब किसी धर्म के हिसाब से वोटिंग नहीं होती है हमारी. बट टेम्प्रेरी रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू ग्रुपिंग्स लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड इवन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर वेलफेयर. बट वो कम्यूनल के हिसाब से नहीं है, ठीक है, रिलीजन वाइज नहीं है. नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वी अंडरस्टैंड एवरी एडल्ट इज गेटिंग द राइट टू वोट.
So this is the feature that forms the basis of our election to Lok Sabha and the state legislative assembly. तो जो भी लोग 18 या 18 से ऊपर साल के हैं, दे हैव द राइट टू वोट, एंड दैट इज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा. पहले जो ये कट ऑफ डेट थी, जो आज 18 साल है, अर्लियर 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से पहले दैट वाज 21 ईयर्स, उसको घटा के 18 इसमें किया गया है. सो दिस अमेंडमेंट एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वोटिंग एज, तो ये आप याद रखोगे. नेक्स्ट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप. So you know that whenever you call yourself the citizen, you call the citizen yourself as a citizen of India. You don't say that, okay, you are the citizen of state X or state Y or state Z. No. So we do not have the phenomenon of dual citizenship, जहाँ नेशनल लेवल पे एक अलग सिटीजनशिप हो और स्टेट की अलग हो. यूएस में है स्टेट की अपनी सिटीजनशिप और नेशन की अपनी सिटीजनशिप, बट इंडिया में वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द फेडरल सिस्टम. सो डुअल पॉलिटी तो है ही हमारा, हमने देखा सेंटर और स्टेट पे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस डुअल पॉलिटी इन द सिस्टम, द सिटीजनशिप इज स्टिल सिंगल इन द केस ऑफ इंडिया. Then the next feature is independent bodies. So we have certain independent bodies working to ensure that there is no, wrong way of things being done. So they are considered as the bulwarks of the democratic system, or you can say, let's say the important pillars of the constitutional system or the democratic system, like election commission, comptroller, auditor general, UPSC, state PSCs. तो इन सब पर definitely एक chapter हमें करना ही है. And there are different provisions in the constitution which ensures their independence. Next is the emergency provision, जिस पे अगेन एक पूरा चैप्टर है. तो different 3 emergencies जो हैं उसके बारे में जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में. Now why do we have such feature? This is actually a unique feature in the case of Indian constitution. So why do we have such feature? Because we have to enable the president to meet any extraordinary situation effectively. क्योंकि सरकार तो कभी भी गिर सकती है ना बीच में, और अचानक से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है और देश में कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, देयर हैज़ टू बी सम अथॉरिटी गेटिंग दैट पावर कि उस इमरजेंसी को हम डील करें. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू सेफ गार्ड आवर सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. हमें डेमोक्रेसी बचानी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है. सो इमरजेंसी के लिए प्रोविजंस तो रखने ही पड़ेंगे. So 3 types are there in the constitution. First is national emergency, article 352 deals with it. Then state emergency, जिसको आप president rule भी बोलते हो, article 356 deals with it. Financial emergency, article 360 deals with it. Of course यहाँ पर इन सब emergency में there is one thing that the central government becomes powerful, and हमारा जो federal structure है center और state का, that automatically gets converted into a unitary structure, which means सारा focus on the center during this process of emergency. और उसके लिए कोई amendment नहीं होता, constitutional amendment नहीं होता. सो नॉर्मल समय में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है सेंटर स्टेट का, इमरजेंसी के टाइम में वो सिर्फ सेंटर पे कन्वर्ट हो जाता है, वो भी अपने आप. दैट गोज़ विदाउट सेइंग बिकॉज प्रोविजंस ही ऐसे हैं, तो वो हम देखेंगे प्रोविजंस, एंड दैट इज़ अ यूनिक फीचर फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट फीचर इज़ योर 3 tier गवर्नमेंट. सो फेडरल तो हमारा शुरू से था सेंटर और स्टेट, ठीक है, लेकिन बाद में व्हेन इट वाज रियलाइज दैट वी शुड हैव अ 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो एट द लोकल लेवल, तो हमारा पास 3rd इंट्रोड्यूस हुआ. तो डुअल पॉलिटी तो थी ही कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से 3rd tier और 3rd लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, एंड दैट इज़ ऑल्सो ओनली इन इंडिया, which is of panchayats and municipalities. So these parts and schedules are related to it, and of course we will have a separate chapter of the local government later. Another feature is cooperative societies. ये भी एक बहुत important topic है, और अब तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी आ गई है, तो उससे भी relevant हो जाता है ये. So the cooperative societies got constitutional status by 97th Amendment Act 2011. These are the provisions dealing with cooperative society, Article 19, Article 43B and Article 243ZH, and a new part got added in the Constitution. Now what exactly are the cooperative societies, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या function है, वो सब हम फिर से separate उसमें देखेंगे. And then quickly summarizing the whole topic, talking about the criticism of the Constitution. तो बहुत लोग, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया. फर्स्टली दे हैव सेड दैट इट इज़ जस्ट बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जो लोग इसको डिफेंड करते हैं, दे काउंटर आर्ग्यू दैट ओके वी हैव बोरोड बट वी हैव नॉट कॉपी पेस्टेड, वी हैव यूज्ड इट विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशंस. Then somebody says, or matlab some scholar says that it is just the carbon copy of 1935 Act because we have heavily borrowed from the act
Then other people claim that this is un-Indian or anti-Indian because we have taken many things from outside. Un-Gandhian बोलते हैं because the Gandhian principles majorly like local government etc were not introduced in the original constitution, जो गांधी जी के principles थे, ठीक है. तो ऐसा बहुत लोग भी कहते हैं. Then there are people claiming about its size कि इतना huge है, elephantine size है. And then they say that this is just looking like a paradise of the lawyers, कि बस lawyers की दुनिया है ये, because of the legal luminaries का जो dominance था. So anyways, these are just the pointers for the criticism that you will have to remember. Now there are certain tables given in Lakshmikant about all of these, जिसमें से कुछ हम अगले क्लास में anyways discuss करेंगे. For example, they have talked about what are the different parts of the constitution, what are the subject matter covers in covered in those parts, and what are the articles covered in them. Then certain important articles, because 490 plus articles हैं तो आप सब याद नहीं रख सकते. There are certain articles which you have to directly remember, and the questions have been asked from directly articles also. So you cannot say कि ऐसा factual है वो नहीं पूछते हैं. I'll show you the PYQs and you will see how many questions are there. तो वो तो करना ही पड़ेगा. Then schedules of the constitution मैं इस पे बात करूँगी, and the sources जहाँ से हमने borrow करा है हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है. So this was all giving you the idea about the salient features of the Constitution of India. I hope you have got a rough understanding of how it works. Now for each of these topics we have a separate lecture dedicated and we will do it accordingly. So thank you so much guys. See you in the next class. Take care till then. Bye bye.